Engineer Suraj Singh, presenting you this report titled Bharat India, an analytical informative talk on COVID-19 plus variant, strain status for January 21st, 2021, that is yesterday, Thursday, reported on today, January 22, 2021. Government provided data worked out spreadsheet file screen share for national awareness. For government has been sleeping. A report. Detailed talk. ये आपके सामने जो सिलेक्शन किए मैंने शीट पर, दिस सिलेक्शन tells about, actually this area tells about, it's about vaccination which is ongoing, which has been ongoing since January 13th, 2021. Vaccination and various questions are there. This is total done till yesterday, 10,43,534, and yesterday only 2,37,050. कल तक जो टीकाकरण हुआ 10,43,534 और जो कल हुआ 2,37,050। 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 13 जनवरी 2021। आप यहाँ देखेंगे ये मैंने अलग से लिया है, एक्चुअल फिगर इसकी नहीं थी तो हमने एवरेज ले ली है, और ये आज का स्टेटस, ये कल का स्टेटस। परसेंटेज आप देखेंगे तो ये आपके सामने है। दिस परसेंटेज इफ़ यू रिलेट दिस टू होल पॉपुलेशन, अगर आप इसको पूरी देश की पब्लिक से मिलाएंगे 130 करोड़ से, तो ये आती है 0.08% प्रतिशत, 0.08, जो कि 1% से भी कम है, बहुत कम है। 1% होने अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 7 या 8 दिन हुए हैं इस कार्यक्रम को शुरू हुए, तो हम इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन भी हमने ये दिया है, बताया है कि क्या चल रहा है। अगर ये ऐसा ही चला तो भाई बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, आई कैलकुलेटेड हेयर, इफ़ यू कंप्लीट दिस इन 91 days, if you complete this in 91 days, we have to vaccinate this figure daily, 1,42 या 43 लाख रोज, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। कोई इशारा नहीं है अभी तक, कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है। इतने हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक इतने ही हुए हैं, और अगर रोज़ माने तो अब तक बहुत हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, आई हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 week. If there is some, just like it happened yesterday, it was 237,000, and day before yesterday it was 131,000. This means there is some up, you can say some graph is up, or there is some progress. So I cannot straight away put allegation without any foundation, without any basis. Let me see for a couple of days. But what about here? Point is that, means what about here? That's the important point. It's big question mark, good question mark here. Issue is here in this range. This is yesterday's statistics. Yesterday means, which is today we are reporting, and this is 28th day, if you consider this the calculation here. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and this is today 22nd day of 2021.
That is where it is. Here we have only 19 crore people so far, little more than 19 crore people so far tested. This status is not rising. I expected that this would pacify, this would rise, this would move fast. But it's not happening. Nothing is seen as such. I'm not finding anything here. That's unfortunate. And you can say total cases that were tested yesterday were 8 lakhs, a little more, which is also nothing, you can say is nothing considerable. Means status is still down, and total cases of infections that has reached, this is 1 crore 6 lakhs and more than that. And also deaths is say yesterday's 14,545 were recorded. This is graphics, daily positive cases. You can see they are just trying to pull down this graph, nothing else. And this is daily tests. You can say how it is moving, like nobody knows. You cannot see there is some statement in this. Ramnandar Saab. Hello, Ramnandar Saab. Hello. Hello, कट गया. So these graphics are not declaring anything, any profile, just random movement of these curves. Means just like means there is no clarity in action. Now move to next sheet, which is for analysis, which is for based on analysis based on detailed information that we have. This information is state-wise, and we have to depend on this because this is provided by government. This information up to here is provided by government. So this is just a copy-paste. Site, and we only have to read it and understand it, that's all. And this is our result of analysis, what our comments are, what announcement I want to say, and this is, you can say, a projection of what should happen, can happen, and these are graphics. And this is what government claims, and this is what should be, that's all. So let us now say what happened yesterday, how many cases were recorded. This is about that yesterday. So we can say in Maharashtra, I will speak in short but in lakhs, okay? Maharashtra 20 lakhs. Let me clear. Maharashtra 20 lakhs, this is updated one, including all. Karnataka 9.34, Andhra Pradesh 8.87 lakhs, Kerala 8.71 lakhs. Delhi 6.33 lakhs, Uttar Pradesh 5.98 lakhs, West Bengal 5.67 lakhs, Odisha 3.34 lakhs, Rajasthan 3.16 lakhs, Chhattisgarh 2. Haryana 2.67 lakhs, Bihar 2.58 lakhs, Gujarat 2.58 lakhs, Madhya Pradesh 2.53 lakhs, Assam 2.17 lakhs, Punjab 1.71 lakhs, Jammu Kashmir 1.24 lakhs, 55,000,
Himachal Pradesh 5,700 something, and Goa 5,200 something, Pondicherry 3,800 something, Chandigarh 2,063, Arunachal 168, Meghalaya Haveli 3, Lakshadweep 48. Because these are active ratio, discharge ratio, and death. This is, you can say, death average. Death average, and this is total of this active case and death case, and this 100 is total of these three, and this 5.21 is multiplied by total crore population 1.3 billion population. So this comes as, if 1.3 billion and multiply by that, you get 6.77 crores. This is main target, this is the main indication that operates on our prediction of forecast. Point is why we are taking this, because they say they have been successful in discharging people. That's why I'm saying currently I'm not including this. I'm including this only 4%, that is active cases, and this is death cases, because active cases lead to deaths while death cannot come back. So this and this were active cases sometimes. These were also active cases, but these have been discharged, so these have been deactivated. But these two are still in force, so I'm not considering this. Though these were also active cases, but the current active cases are deaths plus those in hospitals or otherwise. This is also a problem. We cannot say that we got rid of them, because more than 50% can be reinfected after lapse of 6 months. 6 महीने के बाद इनको भी दोबारा कोविड लग सकता है, जो रिपोर्ट आ रही है. बहुत गंभीर विषय है समझने के लिए, और आप हवा में उड़ाना चाहते हैं तो ठीक है, यू कैन लीव दिस मैटर इन एयर एंड दिस मैटर विल डिसअपियर, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड दिस इज योर, I have taken only 2 years. If you want, you can extend it, doesn't matter. But that doesn't do anything. We are just considering probabilities only. It's not that it will happen. मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने वाला है. This is just probability, संभावना है, और संभावनाएं से ही सब कुछ होता है, आप जानते हैं. These are all probabilities here, and we must understand that point, that probabilities are probabilities, and we must respect probabilities. Now let us consider these months: population relevance, deaths, active cases, deaths percentage, active percentage, this growth, death, and that active cases. And we can say, let us see how it works. This is percentage wise here, and this is crores, death, and actions, active cases. I'm taking month here, but I'm increasing. I'm not taking every month. I'm just taking, you can say, you can take every month also, but that doesn't give any wider picture. Means why to go into that details? We are just considering here 3 months interval, a quarter of a year interval, and which is about 0.25 of year. So here I add, for example, it's 1.2 here I've taken, and you can say 4 is taken here, though it doesn't matter, it could be this way or that way. If I wish, I can change it, but it won't work. I'm just trying to keep it safe in understanding. 1.2 that is here, and 4 that is here. No need of transposer, let it remain as it is. After all, we are trying to understand what's happening. So when I apply a factor of 0.25, that is 1.25 here, 1.25 here, so this becomes 1.51, and this active cases become about 5%. Same way, if you take,
If you take this, you can go ahead down and you see how it works. For example, here again we apply a factor of 0.25 and these figures come in. You can see all these figures. It's clearly means you can read yourself. It's not a problem. No need analysis now. This both result into crores here because 130 crore we are and 130 crores value is applied onto these percentages and we convert them to crores. So 1.2% goes to 1.56 crore, 4% goes to 5.2 crores. And similarly, all these here go accordingly. It means crore deaths 1.57 to 9.33 in variation, and active cases in crores 5.2 to 31.02, and it's a period of 24 months. Already nearly 8 or 9 months are over, so we can say we show somewhere here. This should be our actual result. Means we have so many deaths. In fact, if we take control of whole population, we will have so many deaths and so many crores cases. But this picture is not coming in news because our brilliant people are giving news only for this percentage and this people tested. About this there is no information. So this is secret of this notification, that they are just concentrating on this figure and not on other one. They are concentrating on, you can say, this figure only. That is every day how many people we are connecting, and they are saying, see, we are down, down and down, and active cases are this, like that, just to manipulate some. They think so it helps, fine, let them help. Let them help themselves. Nobody can stop this. Facts cannot be denied. सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते. जितना मर्जी जोर लगा लीजिए वो सामने आएगी. और ये क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट नो दैट दिस इज हेल्थ इश्यू. This is not political or economical issue. This is not issue of bot caching. This is what's happened in America. No, आपको पता है अमेरिका में क्या हुआ. प्रेसिडेंट साफ कह रहे हैं कि 5 लाख तक हम मर सकते हैं अगले महीने. 4 लाख ऑलरेडी मर चुके हैं और ऊपर 5 लाख तो और भी 5 लाख तक का अगला महीना हो जाए. एक राष्ट्रपति कह रहा है और हमारे यहाँ हर बात को छुपाया जा रहा है. अगर आप बात छुपाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, हल नहीं आएगा. हल निकालना है, यहाँ राजनीति नहीं करनी है. हमें किसी पार्टी से किसी से कुछ नहीं लेना है. वोट अलग चीज़ है, स्वास्थ्य लोग रहेंगे तो वोट होंगे, लोग नहीं रहेंगे तो वोट कहाँ से होंगे. ये अब आप ग्राफ देखेंगे, ये हमने ग्राफ जो यहाँ सिलेक्शन किया है पूरे डाटा का किया है. Whole data is selected here in this graph and you can see how these curves are working. And this is main one which is saying how many red line you can see in these lines that crores active cases are here, in danger they are, and these are deaths which are already gone. So they are blue line means they have been cleared, and this is this is happening. And I least bother about this claim of government because this is all fake claim. There is no meaning of this claim. You can see this is a fake claim, and I don't believe in fake claims. Still they say everything is same. Still they say government of India is taking all necessary steps to ensure that we are prepared well to face challenges and threat posed by growing population. All that, all is same. There's no difference. There's no change in government action. All is doing same. So what we say is right. Now this data is there. यार हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, सादिक बात कर रहा हूँ दूसरी कंपनी से रेकॉर्ड लाइन पे. सर क्या सर मेरा नाम सादिक है. तो मैं क्या करूँ यार, शादी तेरा नाम दो. क्यों किया फोन, किसने किया फोन? शादी तू फालतू बात करते रहते हैं. गोल्ड लोन के रिगार्डिंग कॉल किया हूँ सर आपको. हाँ सर आपको गोल्ड लोन की रिक्वायरमेंट है अभी आपका? भाड़ में जा, फालतू बातें करते रहते हैं. फोन दिमाग खराब करते हैं मेरा. फोन के काम कर रहे आदमी डिस्टर्ब करते हैं आके, इनके फोन सुनते रहो बस. काम कर रहा था, कुछ बात कर रहा था, डिस्टर्ब कर. नहाने गई अभी आ रही. These are areas we have to care about. These controls, testing, treatment. कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है. मैं समझा तो चलेगा जिंदा है अभी. मैं भी जाने वाला हूँ, गया नहीं अभी.
ठंड को टाइम है ना, इसलिए मैं कम निकल रहा हूँ। अच्छा है ना, क्या करोगे निकल के? आज आगे जब मैं चले हो उस टाइम में मौसम बिल्कुल साफ था, ये बाद में बना तो मौसम से क्या फर्क पड़ने वाला है? ना अंतर नहीं, ऐसे मौसम होता ना मालूम नहीं, पर जब देख रहे मौसम साफ है, धूप निकलेगी या चला पर वहाँ से बाद में जब निकल आया और लिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सवाल में बैठ गया, फिर धुंध कोहर, ऐसा मौसम बन गया। मैं जब तो निकल आता सो Control 1, Control 2, Control 3. Testing, treatment, discharge. Control 4, vaccination. No plans. This is statistics here. Already discussed. बैठ जाओ, आ जाएगी थोड़ी देर में, आएगी, नहा रही है, आ रही है, नहाने गई है, बैठ जाओ उधर, देख लो। टाइम लगेगा ना, टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत। 12 बजे का हूँ। हाँ, 12 तो बजने वाले हैं। हाँ बजे से जल्दी 2, 4, 5, 10 मिनट। आपने गए किसानों के आंदोलन में? ना जिन पर जमीन जायदाद है, जिसके पास जमीन नहीं वो किसान की बात को वो मजदूरी में आ गया कुछ भी है, आप फसल तो उगाते हैं ना? ना, कुछ नहीं, जमीन वाले इनके लिए किसान। चलो, मैं घर जा सो हूँ। तो क्या हो गया फिर? क्या हो गया? वो थाली बैठे हैं वहाँ से वो
साल का आदमी काम करेगा? हैं? 95 साल का आदमी काम करेगा? आप ये बताइए, आप काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो बात लेकिन नहीं है। वो आ रहे हैं, जिंदा इसलिए आ रहे हैं। एक 97 साल का भी खाने नहीं वाले देखो, ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। तो 95 साल का आदमी काम करेगा? बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे भी हैं। जो कोई दिन का खाना खा रहे हैं, तो जो और भी भाई पड़े हैं रात को, वही क्यों नहीं रुके? रात को भी अरे रुके। खेती भी तो कोई करेगा, हैं? खेती भी तो कोई करेगा घर में। अरे नहीं, घर में तो सब बच्चे ना उनके। यही तो है ना जो आप न्यूज़ देख के बात करते हो, आप सच्चाई नहीं देख रहे। उनकी जमीन छीनने को वो लड़ेंगे नहीं, अब यहाँ क्या होना फिर? तो उम्मीद है गवर्नमेंट को झूरना पड़ेगा। क्या मेरी जमीन आप छीन लोगे? जमीन तो कोई नहीं छीनेगी। आप कहाँ कान में छीन लूंगा? नहीं। तो वो तो यही चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहिए। हाँ, तो क्यों जा रही है? हाँ, गवर्नमेंट क्या चाहिए? वो जमीन तो छीन। क्यों जा रही है वो? क्यों उन्होंने एक कानून क्यों बनाए हैं? किस लिए बनाए हैं? इसलिए बनाया जब कानून टूटने उसके लिए बना दिए। हाँ? टूटेगी नहीं, कानून ना टूटे, जो बना दिए बना ना टूटेगा, देखना, आप लिख लो, आप देख लें। इसको झुकना पड़ेगा, इसकी टांग गाड़ देंगे। ये किसान है, आटा नहीं देंगे आपको, गेहूं नहीं देंगे, क्या कर लोगे? ना, वो तो आपकी बात सही है। आप एक बात, रोटी किससे खाते हो आप? जिम्मेदार से खाएंगे। नहीं देगा तो क्या करोगे? किसान से। अगर वो कहते मेरे घर आके लेकर जाओ, फिर क्या करोगे आप? हाँ, वो तो अपने घर में रोक नहीं माल। फिर क्या करोगे? 2 साल रोक ले, 3 साल। मुझे मोदी की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत है। बिल्कुल। तो क्या खाएंगे आप? वो किसान के पीछे तो हर चीज़ है। फिर और इंसान जो भी जीव जब पैसे कहने का वाला मतलब ये, आप बिना हर जब इंसान किसान के पीछे, ये माने आपकी बात। तो वो क्यों जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ? व्यवस्थी कई जब दादागिरी दिखाए गए, किस लिए? वो उस पर चाबी है ना शासन की। तो चाबी का ताला भी साथ में होता है, ताले तोड़ देंगे, चाबी क्या करेगी? कहते चाबी है ना उसके पास। कहने का मतलब सच्चाई को बोलना चाहिए। ना, वो तो आपकी बात सही, सच्चाई तो सच्चाई। एक बात बताओ, लाखों पागल हैं, नहीं, लाखों के 2 पागल हो सकते हैं, 20 पागल हो सकते हैं, 100 पागल हो ना, सकते हैं, सब थोड़ी होती हैं। लाखों पागल हैं। ना, एक 90 साल का बुढ़ा, 95 साल का बुढ़ा बैठा वहाँ क्या कर रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है? लेकिन कोई बात तो है ना, बात तो है नहीं। तो सुनते क्यों नहीं? हम बदल कि हमें जैसे तुम भगवान बन गए हो? नहीं, तुम भगवान बन गए हो, भगवान हो तुम। नहीं, हम जो हम जैसे बता दो तो भगवान ही बन रहे अपने मन में। तुम ये जो कुछ हो, मुझे ये अरे उन्होंने ही तो तुम्हें सीट पे है। उन्होंने सीट पे बिठाया ना, हाँ, किसान नहीं बैठा रहे हो, तुम उन्हीं से लड़ाई कर रहे हो, और उन्हीं के फिर भी कर रहा है। तो फिर उनकी न्यायिका जो किसानों तुम लाट साहब बन गए हो, खुदा बन गए हो। ना। कहने का मतलब ये, जो बात सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। उनको तुम आतंकवादी बोल रहे हो, कभी उनको देशद्रोही बोल रहे हो, तुम नहीं हो देशद्रोही। कोई उसके हाथ में चाबी, वो कुछ भी गा सके, बात तो ये है ना। और आप आते नहीं है, वहीं से बात बना। रावण भी नहीं रहा, रावण भी नहीं रहा। कोई ना रहा जी, रावण क्या, रावण का आदमी, रावण थोड़ी है। रावण जैसे तो दोनों विद्वान थे, न एक मीनार। क्या औकात है मोदी की? औकात क्या है? रावण जैसे बलवान। इंदिरा गांधी नहीं रही, मोदी की तो वैल्यू क्या है? कुछ भी ना। इंदिरा गांधी से उड़ा दी लोगों ने। मोदी किसानों के पीछे है मोदी। तो वही तो कह रहा हूँ ना, क्यों सिद्ध कर रहा है? ठीक है भैया, वापस ले लो, बात खत्म हो गई, झगड़ा किस बात का है? खत्म कहानी। आपकी चीज पर मैं कैसे लड़ाई कर लूंगा? कोई भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप मुझे ये दे दो, कोई नहीं कर सकता। अब मैं ले सकता हूँ आपसे, कोई नहीं ले सकता बिना। लेकिन वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। बैग बगैर गैर रजामंदी के कोई नहीं ले सकता। तो फिर झगड़ा किस बात का है? ना मान लो, ना मान लीजिए। बच्चे मैं कहता हूँ समझदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो समझदार है, लाखों आदमी बैठे हो, तो पागल है सारे। को सब थोड़ी पागल, एक आध हो जाता है, माने आपकी बात है। ऐसे विद्वान पढ़े लिखे भी हैं, सब तरह नहीं, अगर होते ना भाई, स्कूल के बच्चे होते हैं, मैं मान लेता स्कूल के बच्चे हैं, कायदा को भी जानते हैं, बड़े सारे पढ़े लिखे हैं। आजकल कौन अनपढ़ है? पढ़ाने वाले बूढ़े जो कम पढ़े हैं वो भी जो जाने। तो ये नहीं है सकता ना, शायद आगे का रास्ता खत्म है। आगे का नहीं, अभी जाएगा, देखना आपको जाएगा, अभी जाएगा। आगे भी नहीं आ सकती कभी भी। जैसे 10 साल में 5 साल में शासन हो जाता है, चेंज वैसे नहीं होगा। और कोई सरकार एक तो वैसे ही कोरोना का चक्कर चल रहा है, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो तो सुनते नहीं है, मानते नहीं है। देखो उनको कोई तकलीफ है तभी तो शोर मचा रहे हैं, तो है ही। कोई तो तकलीफ है ना उनको, तकलीफ के साथ ही है, तो उनकी बात को समझो। सुनना चाहिए नहीं, ना। आसमान गिर गया, सुनना चाहिए ना। आसमान गिर गया क्या? ये 2 आदमी है, अमित शाह और ये मोदी। मोदी की क्या है, क्या अब जिद बहस किस बात की है? आज मैं जो 2 महीना हो गए, 2 महीना में अब तक भी ठंड है, 2 डिग्री 3 डिग्री ठंड, जो बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, आदमी बूढ़े बैठे हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं अपने आप, उनको पैसा है, खा रहे हैं, पर मर तो रहे सर्दी में। हम तो जो भी सुन रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, खाने को मिल रहा है। तनख्वाह किसको मिल रही है? जो यहाँ बैठे हैं। किसने कहा आपसे?
ये दुनियादारी जैसे मैं रोज 50 वीडियो देखता हूँ, अच्छा रोज यही काम करता हूँ मैं सुबह शाम तक। हाँ मुझे तो कोई ऐसी बकवासबाजी नहीं दिख रही है। ये लोग गाँव में ही गाँव में तनख्वाह कौन देगा उनको? कांग्रेस जारी गई है काहे की तनख्वाह देगी कांग्रेस? तो भाई हम बैठो कांग्रेस को खुद पैसे नहीं है, वो कहाँ से देगी? वही करूँ ऐसे दुनिया गाय जैसे कोई एक की दो बनावे भूजी सांची चलेगी राजनीति नहीं, औरतें गांव से आ रही हैं, वो तनख्वाह लेके आ रही हैं। कोई नहीं लेगी पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, समझ नहीं आ रही मेरे को बात। जिस पे बीतती है वो जानता है। वो तो है ही आप पे बीतेगी तब पता लगेगा ना। वो सबको मालूम जब पहले जब बस वजन होता ठीक तुम्हारी चीज जाएगी तो मालूम पड़ेगा, दूसरे की जारी जाने तो क्या है। And disturbance came, and you have to afford that sometimes, because I wanted to tell you silently all this by indication. All text of this video, you will find statistics completely, and it is why government is befooling people, showing them, you know, dreams, while something is happening with no risk control. There is no answer from nation, just in name of vaccination. हो रहा है वो हो रहा है, इट विल नॉट वर्क। वैक्सीनेशन ठीक है, सारी दुनिया में लग रहे हैं, कोई आप स्पेशल काम तो नहीं। According to their capacity, you are not doing any special till now. Only 10 lakhs have been vaccinated in 8 or 9 days, so it's nothing very big you have done. कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, कल आपने 2 लाख लगाए, देखते हैं आज कितने लगाएंगे आप। सवाल तो यही उठता है ना। We have to see means what's their efficiency in this. Don't mislead people, please. Now, in our country, more than 102 cases have been recorded, and only 0.08% people have been vaccinated so far. Now, it's nothing very actually more than 1.4 crore vaccinations are required per day. 1.4 crore vaccinations are required per day, and you are doing only 1 lakh or 2 lakhs, so this is negligible, we can say. And 42 crores per day, and if you want to finish in 6 months, you can see then it's half for years, and all these issues for years, because years delay means as much delay is there, that much danger is there. Today is 328 day, 328. 5 to 86% people have not been tested so far. Only 14.6% people have been tested, which is just nothing and very negligible, means those who have. If you want to test everybody according to this speed, you can say that already there are reports this against, not in favor of this vaccination, but it's vaccination free of cost. In Saudi Arab, all are being given vaccination free of cost. Only here, health workers are given free cost, all others shall be charged. So government has no money. Now government claims everything. The government of India is taking all necessary steps to ensure that we are in our country. Most important factor in preventing the spread of virus locally is to impart issued by government. The conclusive facts are, we can say vaccination started is too low quantity till now. Ensure full safety, test self, treat self, vaccinate self, isolate self.
oxygen self, ventilator self, do all activities yourself on your own without depending on government support. Self means on patient's expenses and give government only credit. That's the government. You have to take all care yourself, keep ready-made and many lakhs of rupees with you to meet these expenses of COVID-19 as well as strain or variant, and take your care for discharge from hospital or from isolation. I'm just speaking short, I will not repeat all, because if you go and see on text, of India where thinks very seriously about COVID-19 because it's going to cause explosion soon if not taken due care. Because nothing is being seriously done, incoming vaccines shall not impart any recovery, it's only for purpose of raising immunity, body level immunity, and nothing else. Otherwise we cannot do anything. It is not being understood. Strain is moving, already entered more than 60 countries, and we are one of those countries. You can very much true, and about 100,000 people are going to die there, already 83, 85. Already, and you can say more than 102 variants